हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजेश गुलेरिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हाईटेक व्यू में। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर अवेयरनेस MCQ सीरीज का ये 20th पार्ट है और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 134 MCQs को कवर कर रहे हैं, जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पीछे कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पार्ट 4 को। The question is, dash is a processor which is fixed on the motherboard inside the CPU cabinet and passes the data through electric bus lines or circuits. Dash प्रोसेसर है जो CPU कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर तय होता है और डाटा को इलेक्ट्रिक बस लाइनों सर्किट के माध्यम से पास करता है। ऑप्शंस आर A CPU, B registers, C BIOS and option D RAM. The correct answer is option A CPU. Next question is, the abbreviation of BIOS is. BIOS का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शंस आर A बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, B बिफोर इनपुट आउटपुट सर्विस, C बेस्ट इन आउटपुट सर्वर एंड ऑप्शन D all of these. The correct answer is option A basic input output system. The next question is, on the motherboard RAM is fixed into dash. मदरबोर्ड पर RAM डैश में फिक्स होता है। ऑप्शंस आर A RAM slot, B RAM box, C RAM bar and option D none of these. The correct answer is option A RAM slot. The next question is, inside the CPU cabinet, the SATA and PATA cables are connected from motherboard to dash. CPU कैबिनेट के अंदर SATA और PATA केबल्स मदरबोर्ड से डैश से जुड़े होते हैं। ऑप्शंस आर A हार्ड डिस्क, B फ्लॉपी डिस्क, C रोम एंड ऑप्शन D RAM. The correct answer is option A हार्ड डिस्क. The next question is, the abbreviation of SATA is. SATA का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शंस आर A स्लो एडवांस टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, B सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, C सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड ऑप्शन D none of these. The correct answer is option B serial advanced technology attachment. The next question is, in motherboard PATA stands for dash. मदरबोर्ड में PATA का अर्थ डैश होता है। ऑप्शंस आर A Peripheral Advanced Technology Attachment, B Port Advanced Technology Attachment, C Parallel Advanced Technology Attachment and option D Part Advanced Technology Attachment. The correct answer is option C Parallel Advanced Technology Attachment. The next question is, dash is used placed to cool the processor in the motherboard whenever it gets hot. Dash मदरबोर्ड में प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए उपयोग या रखा जाता है जब भी ये गर्म हो जाता है। ऑप्शंस आर A वाटर, B आइस बॉक्स, C fan and option D air conditioner. The correct answer is option C fan. The next question is, Intel Premium 4 Core 2 Duo etc. are the example of. Intel Premium 4 Core 2 Duo आदि निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ऑप्शंस आर
A. CMOS, B. BIOS, C. Processor, and option D. SMPS. The correct answer is option C. Processor. The next question is the electrical circuits or lines that you see on the motherboard that is used to transfer data is known as. मदरबोर्ड पर आप जो इलेक्ट्रिक सर्किट या लाइन देखते हैं जिनका उपयोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है उन्हें कहा जाता है. ऑप्शंस आर ए बस, बी रजिस्टर्स, सी हीट सिंक एंड ऑप्शन डी SMPS. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The full form of SMPS is. SMPS का पूर्ण रूप है. Options are A. Small memory put in sequence, B. Switch mode power supply, C. Both A and B, and option D. None of these. The correct answer is option B. Switch mode power supply. The next question is Dash looks after and controls the working of the components and the computer system. Dash components और computer system के कामकाज को देखता है और नियंत्रित करता है. Options are A. CPU, B. Monitor, C. RAM, and option D. All of these. The correct answer is option A. CPU. The next question is the heart of the processor which performs many different operations. प्रोसेसर का हृदय जो कई अलग अलग ऑपरेशंस करता है. ऑप्शंस आर ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बी मदरबोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट, एंड ऑप्शन डी मेमोरी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. The next question is IEEE stands for dash. IEEE का मतलब dash है. Options are A. Instantaneous Electrical Engineering, B. Institute of Emerging Electrical Engineers, C. Institute of Emerging Electronic Engineers, and option D. Institute of Electrical and Electronic Engineers. The correct answer is option D. Institute of Electrical and Electronic Engineers. The next question is the ALU gives the output to the operations and the output is stored in the dash. ALU ऑपरेशन का आउटपुट देता है और आउटपुट को डैश में स्टोर किया जाता है. ऑप्शंस आर ए मेमोरी डिवाइसेस, बी रजिस्टर्स, C. Flags, and option D. Output unit. The correct answer is option B. Registers. The next question is the process of division on memory spaces is called dash. Memory space पर division की प्रक्रिया को dash कहा जाता है. Options are A. Pegging, B. Segmentation, C. Bifurcation, and option D. Dynamic division. The correct answer is option B. Segmentation. The next question is number of bits in ALU is dash. ALU में bits की संख्या dash होती है. Options are A. 4, B. 8, C. 16, and option D 2. The correct answer is option C 16. The next question is which flag indicates the number of one bit that results from an operations. कौन सा फ्लैग एक बिट की संख्या को इंगित करता है जो एक ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप होता है. ऑप्शंस आर ए 0, B. Parity, C. Auxiliary, and option D.
carry. The correct answer is option B, variety. The next question is the bitwise complement of 0 is dash. 0 का bitwise पूरक dash है. Options are A 00000001, B 10000000, option C 11111111, and option D 111111 and 10. The correct answer is option C 11111111. The next question is what is the length of IR instruction register? IR instruction register की लंबाई क्या है? Options are A 6 bits, B 8 bits, C 12 bits, and option D 16 bits. The correct answer is option B 8 bits. The next question is which of the following register holds memory operands? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी ऑपरेंड रखता है? Options are A data register, B address register, C accumulator, and option D instruction register. The correct answer is option A data register. The next question is an 8-bit SISO mode needs dash clock pulses to load an 8-bit number into a register. एक 8-बिट SISO मोड को एक रजिस्टर में 8-बिट संख्या लोड करने के लिए डैश क्लॉक प्लस की आवश्यकता होती है. ऑप्शंस आर A 18, B 4, C 8, and option D 2. The correct answer is option C 8. The next question is dash is the raw material used as input and dash is the processed data obtained as output of data processing. Dash इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल है और dash डाटा प्रोसेसिंग के आउटपुट के रूप में प्राप्त संबंधित डेटा है. ऑप्शंस आर A data instructions, B instructions program, C data program, and option D program code. The correct answer is option A data instructions. The next question is which of the following is not a characteristics of a computer? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आर A intelligence, B IQ, C accuracy, and option D versatility. The correct answer is option B IQ. The next question is the part of a processor which contains hardware necessary to perform all the operations required by a computer. एक प्रोसेसर का वह भाग जिसमें कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है. ऑप्शंस आर A data path, B controller, C registers, and option D cache. The correct answer is option A data path. The next question is what does MAR stands for? MAR का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आर A main address register, B memory access register, C main accessible register, and option D memory address register. The correct answer is option D memory address register. The next question is if the control signals are generated by combinational logic, then they are generated by a type of dash control unit. यदि नियंत्रण संकेत संयोजन तर्क द्वारा उत्पन्न होते हैं तो वे एक प्रकार की डैश नियंत्रण इकाई द्वारा उत्पन्न होते हैं. ऑप्शंस आर A माइक्रो प्रोग्राम्ड,
B. Software, C. Logic, and option D. Hardwired. The correct answer is option D. Hardwired. Next question is, which is the simplest method of implementing hardwired control unit? हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को लागू करने की सबसे सरल विधि कौन सी है? ऑप्शंस आर ए स्टेट टेबल मेथड, बी डिले एलिमेंट मेथड, सी सीक्वेंस कंट्रोल मेथड, एंड ऑप्शन डी यूजिंग सर्किट्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टेट टेबल मेथड. सो डियर फ्रेंड्स, आज हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के 108 क्वेश्चंस को कवर किया है. डियर फ्रेंड्स, आगे के सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. डियर फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा. यदि अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. तो जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.